मीन्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इज IFSD 100 माइक्रो एम्पियर है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए उसको कितना करंट लग रहा है? IFSD 100 माइक्रो एम्पियर लग रहा है। तो उससे हिसाब से it means it requires current of 100 micron to give the full scale deflection. Suppose we use this meter as voltmeter in its 1 volt range. Suppose we use this meter as voltmeter in its 1 volt range. अभी 1 volt range में अगर रखेंगे then it must have resistance of 10,000 ohm. 1 volt divided by 100 microampere. If suppose we use this meter as voltmeter in 1 volt range, if अपन को 1 volt range में अगर अपन को मेजर करना है उसकी, suppose we are using for 1 volt range, 1 volt मेजर करना है, वो तो 1 volt range में रखा है, तो उसके लिए उसकी जो सेंसिटिविटी आएंगी उसको आएंगी 1 volt डिवाइडेड बाय IFSD। उसकी सेंसिटिविटी क्या आएंगी? Sensitivity of meter S is equal to 1 divided by IFSD। ये आएंगी उसकी सेंसिटिविटी S is equal to 1 divided by IFSD. If IFSD is 100 microampere, if IFSD is 100 microampere and for 1 volt range, 1 volt divided by 100 microampere, then रेजिस्ट उसका जो करंट सेंसिटिविटी क्या 10,000 ओहम आ जाएंगी। कितने आ जाएंगी? 10,000 ओहम। इस उसका रेजिस्टेंस कितना आएगा? 10,000 ओहम आएगा। उसका रेजिस्टेंस कितना चाहिए? 10,000 ओहम चाहिए। so that 100 microampere current flows through it when 1 volt applied across its terminal. Thus meter sensitivity is 10,000 ohm per volt or 10 kilo ohm per volt. ठीक है? Now in general we can calculate S sensitivity is 1 divided by IFSD ohm per volt. सेंसिटिविटी क्या है? S is 1 divided by IFSD ohm per volt बोलते हैं उसको। So for this now we have the equation. Yesterday or day before yesterday we have seen that we have formula for RS. सीरीज में जो रेजिस्टर्स लगाया हुआ है उसके लिए अपन को हमारे पास एक फार्मूला है, RS इज टू V डिवाइडेड बाय IFSD माइनस RN। V divided by IFSD minus RN. Yeah, we have derived this formula. Okay, so RS is V divided by IFSD minus RN. So 1 divided, if we separate this 1 divided by IFSD separate करेंगे 1 divided by IFSD into V minus RN. So RS is equal to 1 divided by IFSD is equal to S. इसको S बोलेंगे, 1 divided by S into V minus RN. So if we can in this way, thus if the voltmeter sensitivity is given, the value of multiplier and the internal resistance can be calculated. If voltage sensitivity is given, then the value of multiplier and internal resistance can be calculated. ये दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं अपन, हमें कम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल on 50 volt range, meter having 10,000 ohm per volt. Now if we suppose for 10 volt range, for 50 volt range, suppose for 50 volt range
in general resistance is equal to for 50 volt range we can calculate if S is equal to 10,000 ohm per volt. कितना है S for 50 volt range if S is equal to S means suppose S is sensitivity is 10,000 ohm per volt. S कितना है 10,000 ohm per volt है. Then we have internal resistance is equal to, we can calculate internal resistance is equal to 50 volt 50 into S 50 S into V 50 into 10,000 is equal to 500 kilo ohm. कितना आ जाएगा 500 किलो. For 100 volt range internal resistance is equal to 100 into 10,000. ये 100 volt range है. S sensitivity given we say voltage sensitivity है we have given is 10,000. So 100 into 10,000 is equal to 1000 kilo ohm. तो उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 1000 किलो ओम. Thus higher is the range, greater is the internal resistance. Thus higher is the range. If मल्टीमीटर की रेंज है, मल्टीमीटर की जो रेंज है वो अपने 50 वोल्ट रखी और 100 वोल्ट रखी. सो मल्टीमीटर की रेंज जो रहती है उस रेंज में अगर हमें कैलकुलेट करना है 20 वोल्ट तो 20 वोल्ट के लिए हम रखेंगे उस नॉब को 50 वोल्ट पे. अगर हमें मेजर करना है 80 वोल्ट देन 80 वोल्ट के लिए नॉब रखेंगे 100 वोल्ट पर रेंज पे 100 वोल्ट रेंज पे. सो फॉर 50 वोल्ट रेंज we can give internal resistance 500 kilo ohm, and for 100 volt range we have internal resistance of 1000 kilo ohm. Thus higher is the range. So range जो हायर हो जाएंगी तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी हायर हो जाएगा. ये इसकी अब इससे हमें ये पता चलता है. ठीक है.